हेलो एस्पिरेंट्स, दिस वाज आवर लास्ट प्रॉब्लम। सो इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑफ टी बीम और हमको इसमें इफेक्टिव विड्थ ऑफ लेंस को कैलकुलेट करना है। तो ये हम देखते हैं। इसको कैलकुलेट करने के टू क्राइटेरिया हैं जो कि हमारे कोड ने प्रिस्क्राइब किए हैं, सो रिकमेंड किए हैं। द क्राइटेरियाज आर, फर्स्ट क्राइटेरिया इज एल नॉट बाई 6 प्लस विड्थ ऑफ बैव प्लस 6 times of, sorry, there are 6 times of depth of flange. It's a one criteria. Another criteria is L1 by 2 plus BW plus L2 by 2. Here L1 and L2 are same, it is 3 meter. इसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी हमारी विड्थ ऑफ द बैव, BF। तो अकॉर्डिंग टू डेटा हम ये वैल्यू को इसमें पुट करते हैं और देखते हैं कितना वैल्यू निकल के आती है। फर्स्ट एल नॉट इज गिवन एज, एल नॉट इज डिस्टेंस बिटवीन जीरो बेंडिंग मोमेंट। सो एल नॉट इज गिवन एज 3.6 मीटर, दैट इज 3600 mm डिवाइड बाई 6 प्लस BW width of BAV. Width of BAV is given as 300 mm. Width of rib and width of BAV are same. So it's a 300 mm plus 6 time of depth of flange. Depth of flange is given as 100 mm. Thickness of slab, it's 100 mm. So this comes out to be the 600 plus 300, 900, 600, 1500 mm. So it comes out 1500 mm. अगर हम इसको दूसरे क्राइटेरिया से कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा L1 by 2. L1 is given as, L1 is a clear distance. L1 is clear distance between beams. Clear distance between beams. So हमको यहाँ पे दी हुई है डिस्टेंस दी हुई है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो उसको हमको क्लियर डिस्टेंस निकालना है। तो क्लियर डिस्टेंस निकालने के लिए हमको उसमें से विड्थ ऑफ द बैब को घटाना होगा। तो L1 हो जाएगा, L1 will be 2700, L1 is 2700 and L1 and L2 are same, equal to L2. So this value will be 2700 divided by 2 plus 300 mm plus 2700 divided by 2. तो ये वैल्यू हमको यहाँ से लग रहा है कि ये 1500 से ज़्यादा आएगी, hence so the our answer is 1500 mm. So option C is correct. Next problem is, which is asked in UKPSC 2013 and Maharashtra PSC in 2012. The load carrying capacity of circular column with helical reinforcement is how much percentage more than the column with lateral ties. So अगर हम देखते हैं लेटरल टाइज के केस में अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है कॉलम की वो होती है 0.4 FCK एंड ग्रॉस एरिया प्लस 0.67 F बाई माइनस 0.4 FCK डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन. दिस इज फॉर द लेटरल टाइज. इन केस ऑफ लेटरल टाइज, अगर हम लेटरल टाइज के स्पायरल प्रोवाइड करते हैं, हेलिकल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, उस केस में जो हमारी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी वो 5% ज़्यादा होती है, 1.05 0.4 FCK AG यानी ग्रॉस एरिया प्लस 0.67 F बाई माइनस 0.4 FCK into ASC. So this is the correct answer, option A. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. A compression member has a center to center length of 5 meter. It fixed at one end and hinged at other end. The recommended effective length of column is. तो कॉलम कुछ इस तरीके से दिखेगा. This is fixed at one end and hinged at other end. अगर मैं इसकी इफेक्टिव लेंथ को ड्रॉ करता हूँ, इफेक्टिव लेंथ इज दैट लेंथ विच इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन बकलिंग. तो इफेक्टिव लेंथ अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो दिस इज द इफेक्टिव लेंथ. लेंथ ऑफ कॉलम इज गिवन एज 5 मीटर and this length will be K times of L. Here K is equal to 0.8 in this case
length is given as 5 meter, so this is 4.0 meter यानी 0 मीटर. Hence option A is correct answer. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Which of the following statement is correct? This is asked in Karnataka A, so this is a good question, maybe asked in UKPSC. Which of the following statement is correct? Column basis transfer the column load. Column basis transfer the column load to the column foundation. This is correct. जो भी हमारा कॉलम है वो जो भी हमारा कॉलम है उसको वो कॉलम बेस पे ट्रांसफ़र करता है और कॉलम बेस उस लोड को फाउंडेशन पे ट्रांसफ़र करता है. कॉलम लोड इज स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया ऑफ कंक्रीट. ये हम देख पा रहे हैं इस डायग्राम में. इस डायग्राम को अगर देखते हैं तो इसमें क्या है कि ये जो कॉलम है इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है. दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया. एंड जो कॉलम बेस प्रोवाइड किया है उसका जो एरिया है समटाइम्स इट्स ऑल्सो कॉल्ड पेडिस्टल. इसका एरिया इससे ज़्यादा है. पेडिस्टल का एरिया कॉलम के एरिया से ज़्यादा है तो वो लार्ज एरिया में स्प्रेड करेगा. ये भी ऑप्शन ठीक है. लोडेड कॉलम्स आर सपोर्टेड ऑन कॉलम बेसिस. ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है. तो ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू IS 456 minimum cylinder ratio for a short concrete column is. So cylinder ratio we denote it is as a lambda. So for short columns lambda is less than 12, and for long columns lambda is greater than equal to 12. So hence option A is correct. And for pedestal you can remember it. For pedestal its value is lambda की वैल्यू वेरी करती है 1 to 3. This is extra. So next question is the minimum thickness of RCC footing resting on soil is given by. It's recommended by code. Its thickness is 150 mm. If I draw the diagram, let's see, this is the column and this is the footing. And this is resting on the soil. Here is a soil. So its value should not be less than 150 mm. अगर यही फुटिंग रेस्ट कर रही होती पाइल्स के ऊपर, इफ दिस सेम फुटिंग रेस्ट ओवर द पाइल, लेट्स मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ. इसको मैंने फिर से ड्रॉ किया और भी मैं इसको रेस्ट करा रहा हूँ पाइल्स के ऊपर. उसकी जगह दिखती है. सपोज सॉइल नहीं है यहाँ पे एंड सॉइल की जगह पे पाइल्स प्रोवाइड की गई हैं. दिस इज रेस्टिंग ओवर पाइल्स. In this case, thickness of slabs should not be less than 300 mm. So it should not be less than 300 mm. Hope you understand this. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. A critical section for computing maximum bending moment for the design of isolated footing supporting a concrete column is. So अभी जो हमने कॉलम ड्रॉ किया था इसी को हम उठा लेते हैं. एक्स्ट्रा चीज़ों को यहाँ से रिमूव करते हैं. So according to our code, the critical section for
computing maximum bending moment for the design of isolated footing supporting a concrete column is at the face of the column. Hence, this is the keyword concrete column. So here's the answer is at the face of the column here. This is the critical section for bending. Critical section for bending. This is only for the in case of concrete column. अगर यहीं पे कॉलम चेंज हो जाता है, इफ दिस इज अगर इसकी जगह पे मैसनरी वॉल का केस होता तो वहाँ पे हम देखते हैं वो कुछ इस तरीके से होता, उसका कोडल प्रोविज़न डिफरेंट है. अगर मैं वो ड्रॉ करता हूँ, उसको देखते हैं. Suppose this is a masonry wall. इस केस में ये क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा. सपोज दिस इज अ सेंटर लाइन ऑफ मैसनरी वॉल. इन दिस सिचुएशन जो क्रिटिकल सेक्शन होता है फॉर द बेंडिंग, वो हाफ ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द मैसनरी वॉल एंड द एज ऑफ द कॉलम. सो दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन. So you can say this is if this is a A, so this is a by 4 distance from the face of the column. A by 4 मैं इसको थोड़ा ठीक से लिखता हूँ. A by 4 from the face of the column, from the face of the masonry wall or column. So this is all about for this question. Next question देखते हैं. For the purpose of design or reinforce concrete footing, हम concrete footing को डिज़ाइन करने के लिए फ्लेक्सिबल बेस और लीनियर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को एज्यूम करते हैं. Hence option A is correct in this manner. हम अज्यूम करते हैं कि फुटिंग इज फ्लेक्सिबल एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म. दिस इज द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन. इसको अज्यूम करते हैं फॉर द डिजाइनिंग ऑफ फुटिंग. सो हेंस ए इज द करेक्ट आंसर. Which of the following statement is correct? Degree of freedom of rigid block foundation is 6 R6. A foundation is considered as shallow if its depth is exceed its width. So hence option B is wrong and option A is correct. For shallow foundation, depth of footing to width ratio is less than 1. That is, जो फुटिंग की डेप्थ है वो विड्थ से कम या बराबर होनी चाहिए. इसको बोलते हैं हम सैलो फाउंडेशन. एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिजिड ब्लॉक फाउंडेशन आर 6. सो यहाँ पे अगर हम इमेज को देखते हैं, सो दिस इज अ वर्टिकल मूवमेंट. This is vertical movement. This is called vertical movement. This is called vertical movement.
This is called lateral movement. This is called lateral movement. And this is called longitudinal movement. Longitudinal movement. And this is called yawing, and this is called rocking, and this is called pitching. So these are fixed freedom of rigid block foundation. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बार्स मेजर्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ आरसीसी कॉलम शुड नॉट एक्सीड. सो इट्स अ कोडल प्रोविजन एंड इट्स वैल्यू इज 300 mm. अगर इसको लेट्स कंसिडर दिस इज अ column and these are some reinforcement provided here. These are main reinforcements. This is a center. So this distance should not be exceed the more than the 300 mm. Should not be less. Should not be more than 300 mm. Hence option C is the correct answer. Next question देखते हैं. Degree of freedom of rigid foundation blocks are. So this is the same question we discussed just before. Question number 10. This is the same question. So this is also asked in UKPSC and this was also asked in UKPSC. So degree of freedom of rigid block foundation are 6. Hence option D is the correct answer. In a axially loaded spirally column, short column, the concrete inside the core is subjected to. So its answer is triaxial compression. Hence option C. अगर इसको हम समझते हैं तो मैंने यहाँ पे मैंने कोई एक इमेज पेस्ट किया जो कि मैंने इंटरनेट से उठाई थी. अगर ये कॉलम, if this column is subjected to compressive force, suppose P, so there is a no movement, there is a no contribution of compression because of the lateral ties in this case. But in the similar manner, this is a spirally axially loaded column and this is a P load acting over it. तो ये तो compression force इस पे आएगा इसकी वजह से, but because of the spiral reinforcement, some component, because of this component the compressive force develop in this column. So hence axially loaded spirally column is subjected to triaxial compression. Hence option C is the correct answer. The pitch of lateral ties in RCC column should not exceed. So it's a corner provision. Pitch and spacing of both are same. Pitch and spacing both are same. जिसकी वैल्यू कोड में दी हुई है, हमको ऐसे मिनिमम कंसीडर करना है. फर्स्ट इज लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल dimension. Second one is 16 time of longitudinal reinforcement which is minimum, and third one is minimum reinforcement का हमको 16 times लेना है, and third is 300 mm. जो भी इसमें से कम होगा whichever is less. So hence अगर ऑप्शन देखें तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन 16 टाइम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स 300 में ऑल. सो हियर ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट. इफ वी कंसीडर अ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दो बार पूछा गया है, 2007 एंड 2013. फॉर द पर्पज ऑफ डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट फुटिंग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम टू बी. सो ये हमने अभी पहले ही देखा था. वी कंसीडर लीनियर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन. So this is all about in this session. Thank you for watching.